बीएससी सेकेंड सेमिस्टर वेब ऑप्टिक्स गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक देखा कार्डिनल पॉइंट, फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट, नोडल पॉइंट। तो प्रीवियस वीडियो देखते मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। एबे देखिबा कार्डिनल पॉइंट। देखो 3 pairs of points from 6 cardinal points of an optical system. They are first and second focal point, first and second principal point, first and second nodal point. All the 6 cardinal points are situated on optical axis of the system and first is conjugate to second and vice versa. ये 6टा जो cardinal point अच्छी optical axis रो situated on optical axis of a system रो optical axis situated and first is conjugate to second. first रा second रो conjugate में लगी थी and vice versa. तो second रा first रो conjugate तो vice versa देला. If तो मैंने कौन if first is situated in object space then the second is in image space. गुटा दे object space रो थिबो then second टा image space रो थिबो. देखो first है focal point. The focal points are pair of points lying on the principal axis of the optical system and conjugated to the points at infinity. First focal point is a point on the principal axis of an optical system in object space so that ray starting from it after refraction through the optical system becomes parallel to principal axis. The focal points are pair of points point lying on the principal axis. Focal point principal axis ऊपर रोजी of an optical system रे principal axis ऊपर रोजी conjugate to points at infinity. और infinity रो जो point उड़ा रोजी एटा principal axis ऊपर होला और point infinity रे जो point अछि तार सहित conjugate अछि. First focal point टा गोटे point on the principal axis of optical system रे principal axis ऊपर first focal point टा रोजी object space रो रहियो जेपरि कि रे starting from it से फोकल पॉइंट रु गोटे रे जदि जीव और रिफ्रैक्शन कोठी होबो ना ऑप्टिकल सिस्टम रो रिफ्रैक्शन परे प्रिंसिपल एक्सिस सहित पैरेलल लागि जीवो. तो देखो एटा जोटा अछि देखो एटा फर्स्ट फोकल पॉइंट इटु रे गला रिफ्रैक्शन परे प्रिंसिपल एक्सिस सहित पैरेलल लागि जुछि सेटा कहिछि. नेक्स्ट देखो a plane normal to principal axis and passing first focal point is called first focal plane. Second focal point is a point एटा प्रथम देखो first focal plane गुडा a plane दा normal to principal axis को normal होजी और first focal point देउजी सेटमें first focal plane एटा. और second focal point कौन second focal point हैला second focal point is a point on the principal axis of optical system in image space so that the ray parallel to principal axis from an object space after refraction through the optical system focus at this point. The second focal point on the principal axis of optical system. Second focal point is optical system रे principal axis पर रुचि in image space. First focal point object space रे नहीं थी image टा infinite रे बैठला. सेकेंड फोकल पॉइंट इमेज स्पेस रहियो जेपरि कि गोटे रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम ऑब्जेक्ट स्पेस रु गोटे रे जदि पैरेलल हे जीवो रिफ्रैक्शन परे सही पॉइंट दे जीवो एठी गला सेकेंड फोकल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस रे ऊपर एमिति गोटे पॉइंट जेंति गोटे रे ऑब्जेक्ट स्पेस रो जदि प्रिंसिपल एक्सिस सहित पैरेलल हे क्या से रिफ्रैक्शन परे सही फोकल पॉइंट दे जीवो पास करियो सेकेंड फोकल पॉइंट दे. A plane normal to principal axis and passing through the second focal point is called second focal plane. Normal to principal axis को normal passing through second focal point F2 देई जाउची एटा ला second focal plane एटा. तो मैं एटा मोबाइल रे पढौची सेटमेंट के अप डाउन होची एडजस्ट करिवो. Consider an incident ray A parallel to principal axis S x dash after refraction through the optical system
passes through the point F2 on the principal axis. देखो इंसिडेंट रे पैरेलल आसला रिफ्रैक्शन पर F2 देखी गला. After refraction through the optical system passes through the point F2 on the principal axis, whatever be the path inside the optical system, the point F2 is called second focal point. Set है second focal point, and it is free for all incident rays parallel to principal axis. जितनी incident ray आसीबो जितना भी incident ray आसीबो parallel to principal axis, सेही principal axis को parallel करी जितना भी आसीबो रे सेही point दे पास करियो. सेही it is free for all rays parallel to principal axis. So second focal point may be defined as the image point on the principal axis to image point for which object point lies at infinity and plane through F2 and normal to principal axis called second focal point. इसमें second focal point टा आउट प्रकार डिफाइन करी परिया जोटा गोटे इमेज पॉइंट टा प्रिंसिपल एक्सिस उपरे इमेज पॉइंट गोटे सेकेंड फोकल पॉइंट टा प्रिंसिपल एक्सिस रो जोदि पई ऑब्जेक्ट पॉइंट टा इन्फिनिटी रे रहियो आ से गोटे प्लेन से फोकल पॉइंट देखि पास करथु एवं नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस से डाला सेकेंड फोकल प्लेन. Similarly, an incident ray B passing through a point F1 एटा से गोटे इंसिडेंट रे हला B passing through focal point F1 दी जाउची on the principal axis. After refraction through the optical system becomes parallel to principal axis. ऑप्टिकल सिस्टम रो रिफ्रैक्शन पर प्रिंसिपल एक्सिस सहित पैरेलल हो जाउची. The point F1 is called first focal point. F1 first focal point. So it may be defined as the object point on the principal axis for which image point lies at infinity. एटा भी आगुटे प्रकार डिफाइन करि बिरा प्रिंसिपल एक्सिस उपरे ऑब्जेक्ट पॉइंट सेकंड फर्स्ट फोकल पॉइंट टा प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑब्जेक्ट पॉइंट जो द्वारा इमेज पॉइंट टा इन्फिनिटी रहयो. तापर देखो प्रिंसिपल पॉइंट नोडल पॉइंट आसीबो नेक्स्ट. Principal point देखो principal points are defined as the pair of conjugate points on the principal axis of optical system having unit positive linear magnification. Principal point टा pair of conjugate points on principal axis ऊपर इटा conjugate point in optical system unit positive linear magnification रहतो unit positive linear magnification माने +1 magnification टा कहते +1. After refraction proceeds along CF2 and meet the principal axis at F2 called second focal point. It is then consider a convergent coaxial optical system with principal axis x dash देला optical system टा principal axis देला x dash रहथिबो optical system consider कले let an incident रे FB parallel to axis x dash incident रे FB parallel to x dash after refraction proceeds along CF2 and meet the principal axis at F2 called second focal point. एटा FB टा refraction परे CF2 देखि पास करछि CF2 रे ऊपर पास करछि एवं प्रिंसिपल एक्सिस को F2 पॉइंट रो मीट करछि से पॉइंट हला सेकंड फोकल पॉइंट. द इंसिडेंट एंड एमर्जेंट रेज व्हेन produced intersected H2 इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे जेतला बढ़ेया से इंटरसेक्ट कोड पॉइंट करियो H2 रो the plane through H2 and normal to principal axis called second principal plane and its point of intersection P2 is called second principal point. देखो कौन देला ना the incident ray and emergent ray when produced intersected H2 एटा incident ray एटा emergent ray एतला बढ़िया कोड जॉइंट होची H2 रो ए पॉइंट है H2 एटा
एटा भी इंसिडेंट रे एटा गोटे बढ़ेले और एटा इमरजेंट रे सॉरी भूल कहनी एटा इंसिडेंट रे थिला एको बढ़ेले इमरजेंट रे ताको बढ़ेले एटा टिके बंका जे सीधा रहियो एटा भी सीधा रहियो जेमिति ये डिस्टेंस सेम रहियो एटा इंसिडेंट रे प्रोड्यूस कले बढ़ेले एटा इमरजेंट रे ताको पछू बढ़ेले तने को पॉइंट रो h2 पॉइंट रो मीट करछि द प्लेन थ्रो h2 देख जो प्लेन एंड नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस की नॉर्मल called second principal plane सेटा second principal plane कहंदी and its point of intersection p2 point of intersection जेटा p2 normal को जो principal axis को जोटा intersection करछि called second principal point एटा है second principal point तारे देखो similarly the incident ray ed through first focal point f1 and corresponding emergent ray el parallel to principal axis exists and produce intersected h1 the plane through h1 normal to axis is called first principal plane and its point of intersection p1 with axis is called first principal point देखो इंसिडेंट रे ed नेक्स्ट लेक्चर आम ये पढ़ेगा आज टिके अधिक हो जाऊँ नेक्स्ट लेक्चर आम कंप्लीट